मेरे पास बहुत से छात्रों के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में से सबसे प्रमुख प्रश्न ये होता है कि सर, बोलने के दौरान हम सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ करते हैं। और मेरे जो 30-35 साल का अनुभव है, जो मैंने देखा है कि बोलने के दौरान ज़्यादातर स्टूडेंट्स दो जगह पर गलतियां करते हैं, और ये दो गलतियां मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। पहली गलती जो है, नंबर 1, हम वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट को समझ नहीं पाते हैं और इसका अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं प्रयोग, और इसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। ये वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या है? ये वर्ब सब्जेक्ट में है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, एंड if the subject is plural, then verb must be also plural. The verb must also be plural. ये बहुत बड़ा फंडा है। जिसने ये समझ लिया तो मान लो वो कभी ग्रामेटिकली गलत कर ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता है। So I would like to explain it once again. If the subject is singular, verb must be singular, and if the subject is plural, verb must be plural. Suppose I am going to show you with an example. Now I will be going to the board and explain you what is this verb subject agreement in terms of an example. Suppose we say 2 and 2 is 4. Normally this sounds correct, but then sentence itself is not correct, because subject number 1 is 2 and subject number 2 is 2 as 2. If you see the combination of these two, means there are two subjects, so the number of the subject is plural, and if the number of the subject is plural, then verb must also be plural. So verb here is singular, which is wrong. It should have been are. ये are होना चाहिए था। 2 and 2 are 4, ये सही था। 2 and 2 is 4, ये गलत है। ये इस तरह की गलतियां बहुत बार हम करते हैं। इसी तरह से चलो, ये कोई बात नहीं, जैसे अगर हम बोलेंगे ए बॉय एंड ए गर्ल, अगर हमें ऐसा बोलना हो ए बॉय एंड ए गर्ल, फिर आगे यहां पर गॉन फॉर पिकनिक, अगर हमें ऐसा बोलना हो एक बॉय और एक गर्ल, टोटल सब्जेक्ट 2 है, इसलिए यहां होना चाहिए था हैव गॉन फॉर पिकनिक, न कि हैज गॉन फॉर पिकनिक, बिकॉज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसलिए वर्ब है प्लूरल लगाया गया है। सो I hope that now it is very much clear to you that why subject verb subject agreement, this verb subject agreement is important. Now the second mistake, the second area that most of the people generally commit mistakes is that whenever they are supposed to be in free flow, and when they talk about any particular issue or they answer the question, or if there is a particular topic that's supposed to be related to the past, then they forget that they have gone to the past. They continue to speak in present, and this is where they are causing problems as far as grammar is concerned. Now I will explain you on the board. Suppose I am talking about a sentence, I went to school there. Now suppose यहां से मुझे स्विच ओवर करना है प्रेजेंट में ही, मगर मैं क्या करता हूं, there I meet my principal. He tells me that fala fala fala. Now see, I started with the past. I went to the school, and then I said there I meet, there I met. This should have been the correct way of speaking. I said there I met my principal. He tells me that. This should have been he told me that. So this is where we generally commit errors. When we are supposed to be there on song, particularly in English, we forget that we have gone to the past, and there we have to also talk the past sentences only. But then we forget. ये जो switch over है, जो कर नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत बार देखने में आ गया है कि grammatical mistakes होते हैं, लोग confident नहीं होते हैं बोलने के लिए. So in the end, I like to tell you that if you take care of these two things, that is
verb subject agreement while speaking on a particular issue, or whosoever is going to be there, whosoever you are going to talk to, if you speak in this very particular fashion, I am 100% sure you are never going to commit any grammatical mistake, and the people will take you very seriously and they will understand your language. But on the other, at the same time, if there is going to be this very part where you are going to switch over to the past and then come back to the present and go to the past again, I think that that's where you are going to actually maintain the grammatical sanctity. But if it is going to be only in one particular tense where you normally do, then that's where is going to be the problem. So, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप जब भी बोलें इस बात का ख्याल रखें कि आप पास्ट में तो पास्ट में जाइए, अगर आप प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में आइए, और अगर आप प्रेजेंट से पास जाएं तो फिर पास्ट में जाइए, और वापस आना चाहते हैं फिर वापस आइए। इस तरह से आपका ग्रामर सही होगा। यही मेरी आज की क्लास है।